सकते हैं वैसे बाय द वे। चलिए ठीक है। सो आज से हम लोग शुरू करते हैं लीडिंग केसेस। और लीडिंग केसेस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा डिस्कशन के लिए। पहले हम एक पर्टिकुलर केस को डिस्कस करते हैं, उसके बाद लीडिंग केसेस के इंग्रेडिएंट की तरफ एंटर करेंगे। सो लीडिंग केसेस का एक पर्टिकुलर डेमोन्स्ट्रेशन, टुडे इज आवर 18th सेशन, till 21st session, that is the 19th, 20th and 21, including today, next 3 session and this session, 4th session, we will discuss regarding leading cases. For the purpose of all the ingredient, all the terminology, what is available into the leading cases, like obiter dicta, Article 141 and all, we will discuss through this Lalita Kumari and other criminal cases. So let us start. शुरू करें। पहले हम ललिता कुमारी को देखते हैं कि व्हाट इज दिस जजमेंट। इट्स साइटेशन यदि देखें, थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर लूं। So this is the 2013 14 SCR 713। पहले थोड़ा सा मैं एक रिदम सेट करना चाह रहा था यहाँ पे। साइटेशन यूजुअली याद होता नहीं है, कई बार हम लोग भूल जाते हैं। ललिता कुमारी के लिए स्पेशल पार्ट है 13, 14, 7, 13। दिख रहा है वहां स्क्रीन पे। 2013 वॉल्यूम 14 SCR 713 पेज। दिस इज द साइटेशन फॉर ललिता कुमारी। आई गेस कि आप लोग अभी इसको भूलेंगे नहीं एटलीस्ट। 13 का जो नंबर है ना सर, बड़ा ही ऑड नंबर माना जाता है। This is started from 13, 14 and 713. Now come to the ललिता कुमारी। ललिता कुमारी है किस चीज के लिए? This is concerned to the registration of FIR, especially in cognizable offense. मैं क्विकली हेड नोट्स पे जाऊंगा and then we'll go to the judgment, then again come back to discuss the thing. This leading cases, Lalita Kumari, it was the judgment of 5 judges bench. It is a constitution bench judgment. P Sadasivam, CGI, Dr. B.S. Chauhan, Ranjana Prakash Desai, Ranjan Gogoi and S.A. Bogde. And it was pronounced on, again, this is the 12th November 2013. In writ petition criminal number 68 of 2008. This is the formal introduction of Lalita Kumari. अब जब कभी भी इसको आप साइट करेंगे, ये साइटेशन आपके पास होगा और ये काउस टाइटल आपके पास होगा
और ये 5 जजेस बेंच जजमेंट होगा। ये कहीं ना कहीं आप रेफर करेंगे, कैसे रेफर करेंगे, दैट इज योर ओन डोमेन। बहुत सारे सैंपल्स हैं, एंड दिस इज कंसर्न टू सीआरपीसी, especially section 154, which is talking about registration of FIR. And the main questions before the bench was whether mandatory. So during discussion of these particular section, the court went through something, Article 21, which is there. Also discussed section 39 and 154. Section 39 is talking about the mandate under section 39 to inform about commission of offense and what would be its implication. Just come there. Section 154, subclause 4, 2 and 5, IPC section 166A, two 54, 7th schedule, Article 254(1), 7th schedule, concurrent list entry 2, and the state list entry 2, inconsistency between law enacted under concurrent list and the state list. This was also discussed. Article 21, right to life, whether violated if FIR is registered without holding preliminary inquiry. It was discussed properly. What is the meaning of investigation? And what is the initiation of a investigation by police? What is the meaning of police record? An FIR book and general diary? And they have discussed properly what is the difference between FIR book and general diary. And then discussed the interpretation of statutes, that is the rule of interpretation, which is the literal rule of interpretation and its application for the purpose of interpretation of section 154. They also discussed one legal maxim that is called unius set exclusion ulterium and its application for the purpose of interpretation of section 154. And certain words are there, that is the inquiry. What is the meaning of inquiry in context of section 2G of the CRPC? So if I will count the paragraph, just I'm coming there. So this is first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, 10th, and 11th. टोटल 11 डिफरेंट पॉइंट्स डिस्कस किए गए हैं. व्हाई आई एम पॉइंटिंग आउट ऑल दीज थिंग्स? हमने एक केस डिस्कस किया था क्यूरेटिव पिटिशन के लिए, इफ यू रिमेम्बर,
और उसके अंदर क्या था, इट वाज what is the citation for the curative petition? अशोका रूपा अशोका रूपा शोकक. रूपा अशोका. So unless until we will point out all these things, we are unable to locate how many types of questions can be asked from this judgment. Judgment may be focused on either one part or two part. Out of this 11 points, and we need to answer that particular points only as per the questions asked. So पहले हम इस चीज को समझते हैं कि ये केस है क्या. Let us read this part. The instant cases were referred to the Constitution bench for deciding the question whether a police officer is bound to register a FIR upon receiving information relating to commission of cognizable offense under section 154, or the police officer has the power to conduct a preliminary inquiry in order to test the veracity of such information before registering the same. This is the substantial question of law before this bench, and it was a referred case to the Constitution bench. So, first of all, we need to understand clearly what was the issues before the court. I'm repeating it again. Whether a police officer is bound to register a FIR upon receiving information, यहाँ खत्म नहीं होता है, आगे भी वर्ड्स, और वो वर्ड गाइडिंग है. रिलेटिंग टू commission of a cognizable offense, it was the question is very guided. Again, I am repeating this question. Whether a police officer is bound to register a FIR upon receiving information relating to commission of cognizable offense under section 154 of CRPC. This issues is confined to cognizable offense only. Or the police officer has the power to conduct a preliminary inquiry in order to test the veracity of such information before registering the same, concerned to cognizable offense only. It was the issues before the court for the Constitution Court to decide this answer. कभी भी आप ललिता कुमारी के बारे में डिस्कस करेंगे, you must have to start with the issues before that Lalita Kumari. Issues in two parts. One is concerned to the mandatory registration. Another is concerned to the preliminary inquiry before registering the same. एक सेकेंड और मैं इस पे देना चाहूंगा because this is the most important part. We will answer, court will answer accordingly the things. See from here. पहली बात तो ये भी याद रखना पड़ेगा कि this was the instant cases were referred to the Constitution bench. This is the referred case to decide a question whether, start from here. This is the very important word. Every time you have to locate it. Whether a police officer is bound to register a FIR upon receiving
information relating to the commission of cognizable offense under section 154 of CRPC, or the police officer has the power to conduct a preliminary inquiry in order to test the veracity of such information before registering the same and answering the reference the court held. अब जरा देखिए, थोड़ा सा मैं स्ट्रक्चर कर लूं, then we will discuss one by one. This is 1.1 is there. How many points are there? Let us just calculate first. 1.2, 1.3, 1.4, 1.5. Now 2 point, another point is started. This is the 2. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5. Then again 3 is started. So 3.4 was there. Again 4 is started. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 and done. See, this is the unanimous judgment. Judgment of the court was delivered by Justice then and there CGI P. Sadasivam. So there is no ambiguity or any conflict or any other reasoning regarding this judgment. And I'd like to focus on this part also. This is the outline usually. So case law reference under reference. अब आप ये देखिए यहाँ पे 2008 7 SSC 164 referred to para 3, which is referred in this judgment at para 3. Again referred to another judgment, and another word is relied on. Relied on. So we need to also understand what is the difference between referred to and what is the difference between referred to and relied on. This is also the important part. So that as and when required, we can refer to the court or we can rely on the particular paragraph. Unless until we will not understand the difference between these two, we cannot exactly project before the court during the proceeding. So this is also the important part. Just I am crystallizing all the important part where we are going to be focused, so that we can understand the complete sense of Lalita Kumari. And then we will discuss the extension or latest development. What is this? As we discussed earlier, that judgment is also in your screen now. That is also I taken here. This is the 2025 INSC 350. So before going into them,
we need to understand first what is the Lalita Kumari exactly has discussed, and what is the, well, the things is what, section 154 is already there in the CRPC, but there was little confusion regarding registration of FIR and preliminary inquiry. The central part is the registration of FIR, mandatory and preliminary inquiry. So it was lot of confusion before the law. So that is why all these questions was referred to this Constitution bench, and Constitution bench decided. But still, some confusion is required, is there, and because of them, some more clarification is required. This is what. Uh, this is what. This is any judgment is what? It's a clarification regarding the law, which is started from substantial question of law. A substantial question of law means there is a certain confusion or doubt regarding the position of law. That's what this is, a substantial question of law. Am I clear up to this point or not? Yes, sir. Once the law is involved, which is having very general in nature, and this is for the nation, not for an individual case or individual party. So any clarification or extension or any scope, change in a scope or extension in a scope, or any modification or any amendment by in any manner, it must be informed to the nation by the way of judgment, specifically by the way of a reported judgment, isn't it? Amma sir. Yes, sir. So whatever is reported through the extension or clarification itself and further development or extension, there are two part. Just clearly understand this part, then we will discuss properly on a further line. Oh, I'm sorry, no one is left, everyone is joined. Granted, sir. I was the one. Okay, thank you, thank Thank you. you, sir. So the point is very clear. See, तीन चीज देखिए, to understand the entire the complexity, let us again revisit on three part, which is called the question of fact, question of law, and question of substantial question of law. Once any fact in dispute, facts in dispute in any case, the questions regarding the fact, which is answered by the court by way of evaluating the evidence rendered by the both parties. So that is called the question of fact. Questions relating to the fact is called the, which has to be determined by the court, is called the question of fact. फिर से मैं थोड़ा सा एलिबरेट करता हूं. जब कोई मैटर आता है लाइक अ प्लेंट और एफआईआर और प्रोसिक्यूशन चार्जशीट एंड ऑल, सिविल की ही बात कर लेते हैं. जब कोई केस सामने आता है, देन प्लेंट, then written submission, lot of fact is incorporated into the plaint is what, it's a bundle of fact including the cause of action, which must comprise the rights and violation of rights.
That's the cause of action only. So it is a bundle of fact. Reply or WS is just another bundle, another set of facts. So after comparing these two facts, plant and WS, what is the differences among them? Where is the disputed? Where is accepted? That there is a possibility lot of fact may be accepted, some fact may be distributed, or lot of fact may be distributed. So all the disputed fact need to be determined. Whatever is the admitted, no need to determine by the court. If the court will enter into them, whatever is the admitted, the exercise would be extensive as well as expensive too, and unnecessary. As in when required, they are discussing that part, but primarily the disputed part has to be decided by the court. So whatever is the disputed point, that is called the issues. So issues wise, court is asking evidence from both the side, and as per the evidence act, they will examine the entire evidence, but all the evidence produced before the court may not be necessarily admissible for further reference. So it is possible some of them is admissible and accepted as per the norms. So, and then evaluated and then answered this question. I'm just coming to the point. All evidence rendered by the party may not be necessarily or by default admissible evidence, right? So whatever is the admissible evidence, on the basis of that, not all, only admissible evidence, on the basis of that, court will proceed to decide the issues. It may be tilt by either side, one side or other side. Just a minute, just a minute. Good morning, Ajay ji. So the point is this. So the point is this. On the proved set of fact, which is the basis, which is based on admissible evidence only, not all evidence. So on the basis of proved set of fact, which law is applicable on that proved set of facts, it is called the question of law. अब एक एग्जांपल और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं. Suppose there is a road accident. Possibilities is there. हिंदी फिल्म को यदि देखें तो पता चलता है बहुत सारे एक्सीडेंट कराए जाते हैं. अब बहुत सारे एक्सीडेंट हो जाता है. तो जहां एक्सीडेंट कराए जाते हैं, दैट इज क्लियर अ मैटर ऑफ सेक्शन 302. इट्स अ प्लान्ड इंटेंशनल मर्डर. जहां एक्सीडेंटल हो गया 304 लगेगा. इंटेंशन मैटर करता है यहां पे. तो प्रूव्ड सेट ऑफ फैक्ट के ऊपर ये डिसाइड होगा विच लॉ इज एप्लीकेबल, 302 और 304. दिस इज द क्वेश्चन ऑफ लॉ. There is no any ambiguity in 302 and 304, and there is a proved set of fact. On the basis of that, which law is applicable, which is called question of law.
But once law itself is not clear, need certain clarification regarding the law. For example, in this case, 154 is there. Now the question is, once cognizable offense के बारे में information आता है, then we should register FIR or we should check the veracity that information is correct or not. There is a confusion. So this is confusion regarding law. Because section 154 itself is not so elaborated that they can cover all the possible events in future. So for that purpose, court will sit and decide case to case basis. Okay, here is something extension or something more clarifications. So what I want to say, anything regarding law or interpretation of law or application of the principle of law, either it may be first time it is decided with the full authority, that is called the source, and then there might be possible certain development into them by way of addition, modification, amendment or explanation or clarification, because सेक्शन के अंदर प्रोवाइजो भी होता है और उसके साथ एक्सप्लेनेशन भी होते हैं. दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द सेक्शन sometimes, and this is the explanation and proviso for law declared by the court by way of further development, right? And this is also the part of concern to that particular part. It must be reported, it must lead it through the substantial question of law, and this is called the extension. Otherwise, we can say application. Mind it, for the purpose of application, nothing explanation is required. Things are clear, proved set of fact is clear, just apply and get the result and apply for a particular case. Affected is the parties before the court. But development, modification, substantial questions of law, it is leading towards the law declared by the court, and this is important for the nation. What application to further cases. This is the fine line difference between extension, modification, and whatever is this. One source is there, the Lalita Kumari. As in, when some clarification will come regarding this, it must be treated as extension because this is coming through certain clarifications or certain changes. Clarification always settles the ambiguity, right? So what we will do, first we will see this Lalita Kumari judgment, then we will find out what is the extension among them, what is the clarifications came through the judgment, that is the 2025 judgment, right? So I guess I'm very much clear about the objective what we are going to explain today. सर एक डाउट था सर छोटा सा. Please. सर इसमें जैसे हम नॉर्मली कोर्स में विशाखा वाली जजमेंट है जिसमें गाइडलाइंस आई कि these guidelines should be followed in workplaces, all these things. इसी तरह से सर जैसे ललिता कुमारी वाली जजमेंट है, ये भी हम इस फॉर्म में इंटरप्रेट कर सकते हैं कि गाइडलाइंस है पुलिस के लिए. Of course, yes, we can say.
Of course, see, guidelines is the different part. Judgment is the different part. थोड़ा सा डिफरेंस है, गाइडलाइन एंड जजमेंट में थोड़ा सा फाइन लाइन डिफरेंस है. जैसे अभी सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ और क्वेश्चन ऑफ लॉ में डिफरेंसेस है, जैसे व्हाट इज एक्सटेंशन एंड व्हाट इज द एप्लीकेशन में डिफरेंसेस है, उस तरीके से उस पॉइंट पे भी डिफरेंस है, बहुत क्लियर कट डिफरेंस है. गाइडलाइंस यूजुअली एग्जीक्यूटिव एंड पे आते हैं और सर्टेन सिचुएशन के लिए वो गाइडेड होते हैं, और कई बार ऐसा आएगा कि उस सिचुएशन या फिर कोई पावर के साथ वो कन्फ्लिक्ट करने लगेगा, तो उस गाइडलाइन के बेसिस पे एग्जीक्यूटिव वाले पे वो रोक सकते हैं. बट जुडिशियल ऑर्डर यदि है गाइडलाइंस पे, यदि कोई गाइडलाइंस जुडिशियल ऑर्डर के तहत है, तो दे आर बाउंड टू फॉलो अंडर आर्टिकल 143, आई गेस 143, which mandates every authority, 143 or 144 is there, every authority has bound to, rightly or wrongly, bound to follow the judgment. So the guidelines coming through the judicial verdict, it strongly binding on the authority, even the lower court also. Sometimes, you know, coordinate and below bench this court also. This judgment that we will discuss in the further discussion. आज का एजेंडा एकदम क्लियर है कि किसको हम एक्सटेंशन माने. यदि आप कोर्ट में परफॉर्म करने जाएंगे तो कई बार आपको ये स्लाइट डिफरेंस दिखेगा और उसी पॉइंट पे पूरी आर्गुमेंट जाएगी, और वही चीज लीडिंग केस में रिफ्लेक्ट होगा. मैं सीधा सीधा पहले मैं कंक्लूजन पे आऊं ललिता कुमारी पे. ललिता कुमारी वाला जो इश्यूज था ना, वो बहुत क्लियर इश्यूज था. ये रिलाइड अपॉन वगैरह जो है ना, रिलाइड अपॉन का मतलब ये है कि सर्टेन प्रिंसिपल्स वाज इवॉल्व्ड इन अनदर जजमेंट. वी आर इनहेरिटिंग दैट प्रिंसिपल इनटू दिस केस, and relying on that we are coming to the conclusion. So the principle is not evolving here, that principle is inheriting and applying. But refers means what, कि look इस केस में ऐसा हुआ था, और may not be necessarily कि वहां से हम कुछ फॉलो कर लें. बट डिस्कशन से क्या होता है कि एक तरफ एक माहौल बनता है, कि एक डायरेक्शन क्लियर होता है. Ajay, I'm sorry, someone was there at door. Sir, no so need. a reference for the purpose to develop an understanding and guiding towards a certain path, discussion is required. But relied part means what? Something we are, some principle we are using here. In another words, in present context, that principle is required to resolve it, and we are inheriting. Otherwise, we must have to evolve the principle and then proceed to resolve it. So this is the cyclic process for the adjudication or argument or court का ये process for the purpose of interpretation. It comes on the way. मैं आपको सीधा सीधा एक पैराग्राफ पे ले जाना चाहता हूँ. 11 पॉइंट हमने आपको दिखाया है, उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट जो 11th पॉइंट है, दैट आई वांट टू शो यू. सो सी, सारे जजमेंट्स जो यहाँ डिस्कस किए गए हैं वो आपके स्क्रीन पे हैं. This is the 11th point. Eleventh is the conclusion, and it is coming at para
111, see this is the para 111. मैं सिर्फ इस पैराग्राफ पे जाना चाहता हूं, ओरिजिनल जजमेंट पे, फिर अपने आप ये पूरा कवर हो जाएगा। पैराग्राफ 111, this is the paragraph 111 which is the conclusion. आप जरा देखिए, इश्यूज आपके ब्रेन में है। अब हम सीधा सीधा डिस्कशन पूरा है, डिस्कशन में मैं नहीं जा रहा, सीधा कंक्लूजन पे जा रहा हूं, और कंक्लूजन की समरी पे नहीं, एग्जैक्ट कंक्लूजन पे, राइट। कंक्लूजन क्या कहता है, पहले इस कंक्लूजन को देख लें। In view of the aforesaid discussion, we hold registration of FIR is mandated under section 154 of the code. Now, यहां पे फुल स्टॉप नहीं हो जाना चाहिए था, नहीं होना चाहिए। आगे देखिए, नाउ इफ लग गया है, यानी सर्टेन गाइडेड कंडीशन इज देयर, जस्ट कैप्चर दिस पार्ट, मतलब वो पार्ट तो है ही, आगे का पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां पर हम लोगों को फोकस करना है, और वही क्रूशियल पार्ट है जो देखना है। इफ the information discloses now they entered into the content of the content of the information received after, see, some information will come before you which says exactly this is the cognizable offense. That is not enough. If you will go through the content and things are undoubted, disclose करता है कि yes, on such and such date, such and such place, such and such things, by the fact discloses the cognizable offense happened, then commission of cognizable offense. And the another condition is also there. The first condition is the information discloses the commission of cognizable offense, and no preliminary inquiry is permissible in such a situation. So the test is discloses, right? So ऐसे कंडीशन में कोई प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की जरूरत नहीं, नंबर वन। नंबर टू, इफ द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड, क्या हो सकता है, या तो वो डिस्क्लोज करेगा या डिस्क्लोज नहीं करेगा, दो ही कंडीशन है ना। तो दूसरे कंडीशन पे अब चलते हैं, पहला तो क्लियरली डिस्क्लोज कर दिया, यानी एफआईआर रजिस्टर मैंडेटरी हो गया। अब दूसरे पॉइंट पे जाते हैं, इफ द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड डज नॉट डिस्क्लोजेस, तब क्या करें, डज नॉट डिस्क्लोजेस अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, अगेन यहां एक राइडर है, बट वो डिस्क्लोज नहीं करता है, बट कहीं ना कहीं ये स्मेल है कि हो सकता है, तो वैसे कंडीशन में इंडिकेट्स द नेसेसरी फॉर एन इंक्वायरी। A preliminary inquiry may be conducted only to ascertain whether cognizable offense is disclosed or not. वो ये कह रहा है कि यदि कहीं डाउटफुल है बट इंडिकेट कर रहा है द नेसेसिटी फॉर एन इंक्वायरी, इंक्वायरी की जरूरत है, तब एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होगी, और उसकी में भी कंडक्टेड किया जा सकता है, और उसके लिए एक ही ऑब्जेक्टिव है, ओनली टू असर्टेन वेदर कॉग्निजेबल ऑफेंस इज डिस्क्लोज्ड और नॉट।
सिर्फ यही, और कहीं नहीं आपको जाना। क्लियर कट बाइंडिंग है, whether cognizable offense is disclosed or not. So what would be the outcome of the preliminary inquiry? Answer is yes or no. So what should be after that? So let us go through the third part. Third is, if now information nahi, inquiry discloses. अब जरा एक डिफरेंस समझिए जहां पर आप लोग कंफ्यूज करेंगे और क्वेश्चन गलत होने की संभावना है। दूसरा कंडीशन ये कहता है कि इफ द इंक्वायरी डिस्क्लोजेस, और दूसरे में ऊपर में अभी हमने देख लिया, और वो ये था कि इफ द इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजेस। फर्स्ट पार्ट क्या था? इफ द इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजेस, और दूसरा यहां पर ये है इफ द इंक्वायरी डिस्क्लोजेस। थर्ड पॉइंट, तो इस पूरे लाइन में सिर्फ एक ही वर्ड चेंजेस है, वो है इंक्वायरी एंड इंफॉर्मेशन। आप ये अंतर समझ रहे हैं अहमद साहब? सर वो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी से रिलेटेड क्लैरिफिकेशन दिए जज ने। नहीं, मैंने वो जो इंफॉर्मेशन आपको मिला वो यदि डिस्क्लोज करे, वो नहीं डिस्क्लोज करे तब इंक्वायरी होगी, और इंक्वायरी डिस्क्लोज करेगा। करेक्ट सर। इंक्वायरी रिपोर्ट दोनों अलग है। सवाल यदि पूछेगा वहां पर कि व्हाट हैपेंड, व्हाट इज द आउटकम व्हेन इंक्वायरी डिस्क्लोजेस द कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस, एट द सेम टाइम वो सवाल को हटा करके हम दूसरा सवाल पूछ रहे हैं, इफ द इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजेस कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल। दोनों अंतर है सर। सर इसमें मैं थोड़ा सा सर, जैसे मैं अपने वर्ड्स में बताऊं, जैसे सर कि मैं एक पुलिस स्टेशन जाता हूं और बताता हूं कि वहां रेप हुआ, एक एग्जांपल, ऑफेंस कॉग्निजेबल है, बट आई एम ओनली द इंफॉर्मेशन, और एक सर खुद रेप विक्टिम जाए पुलिस स्टेशन, मींस उसको अंदर कुछ जरूरत ही नहीं है कि मैं, मतलब पुलिस जो उसको, शायद मेरा व्यू ऐसा है कि जज शायद इस जजमेंट से कुछ इस तरह की क्लैरिटी देना चाह रहे नहीं, हैं। वो हम बाद में डिस्कस करेंगे सर, पहले इस पॉइंट को जरा कंक्लूड कर दें, वी विल डिस्कस अगेन दैट पार्ट। So let me just conclude. If inquiry discloses the commission of offense, outcome is the same. The FIR must be registered as earlier. But there is a difference between the inquiry and information. In cases where preliminary inquiry ends, so another condition what? Either discloses or not. So now we are going to the another part, not. So in cases where the preliminary inquiry ends in closing the complaint, a copy of entry of such closure must be supplied to the first informant forthwith, and not later than 1 week. It must discloses reasons in brief for closing the complaint and not proceeding further. This is the third point. So the preliminary inquiry रिक्वायर्ड है या नहीं, वन क्वेश्चन। यदि रिक्वायर्ड है तो उसके आउटकम दो हो सकते हैं, एक कॉग्निजेबल ऑफेंस का डिस्क्लोजर, और यदि डिस्क्लोजर है तो एफआईआर मैंडेट है, और उससे ज्यादा पुलिस इंक्वायरी करेगी नहीं। ओनली वर्ड है, आप देखिए ना यहाँ स्क्रीन पे है, ओनली टू असर्टेन वेदर कॉग्निजेबल ऑफेंस इज डिस्क्लोज्ड और नॉट। और यदि वो डिस्क्लोज हो जाता है तो फटाफट आप रजिस्टर कीजिए, और यदि डिस्क्लोज नहीं होता है तो केस क्लोज है, और केस क्लोज है तो आप पूरा रीजन वहां एक्सप्लेन कीजिए। पहले दो चीजें यहाँ पर, यू नीड टू एक्सप्लेन डिस्क्लोजेस, यू मस्ट, द आईओ और इंक्वायरी जो कंडक्ट कर रहा है मस्ट डिस्क्लोजेस द रीजन इन ब्रीफ फॉर क्लोजिंग द कंप्लेंट एंड नॉट प्रोसीडिंग फर्दर, और वो भी नॉट later than 1 week, and to whom? To the first informant. Am I clear up to this point?
एब्सोल्युटली सर, क्लियर सर। नाउ देन अब आगे क्या जरूरत पड़ गई लिखने की? आगे भी कंक्लूजन है, उसको भी देख लेते हैं, और वो 4, 5, 6, 7 आगे भी उसको भी देखते हैं। द पुलिस ऑफिसर, अब दिस इज द ड्यूटी ऑफ द पुलिस ऑफिसर। द पुलिस ऑफिसर कैन नॉट अवॉइड हिज ड्यूटी of registering offense if cognizable offense is disclosed. Now the rider is this: if cognizable offense is disclosed. और यदि एम्बिगुअस है, इंक्वायरी की जरूरत है, और वो लेकर के बैठ गया, टेबल टेबल खेलने लग गया, टू टाइम बाई, टू डू अ फेवर टू समवन, or to dereliction of duty, anything might be happen, then in that condition, यहाँ क्लियर लिखा हुआ, पुलिस ऑफिसर कैन नॉट अवॉइड हिज ड्यूटी टू रजिस्टरिंग ऑफेंस इफ कॉग्निजेबल ऑफेंस इज डिस्क्लोज्ड। सो मैंडेटरी है, और आप ड्यूटी बाउंड हैं, आप उसको करेंगे। यदि आप नहीं करेंगे तो क्या होगा? एक्शन मस्ट बी टेकन अगेंस्ट हियरिंग ऑफिसर who do not register the FIR if information received by him discloses a cognizable offense. This is in Lalita Kumari only. 13 में ही ये डिसाइड हो चुका था। यदि कोई पुलिस ऑफिसर नहीं होता है तो आप उसके अगेंस्ट एक कंप्लेन करके उसको आप ये कर सकते हैं, या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी ले सकते हैं। देखिए आगे आगे क्या कह रहा है, जरा वो भी देखिए। The scope, this is talking about the preliminary inquiry and the scope. The scope of preliminary inquiry is not to verify the veracity or otherwise of the information received. कहां से रिसीव हुआ, कैसे हुआ, उस पर नहीं जाना है, but only to ascertain whether the information reveals any cognizable offense or not. The scope of preliminary inquiry is also discussed. So स्पेसिफिकली क्वेश्चन में स्कोप ऑफ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी भी पूछ सकता है, या ये भी पूछ सकता है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर ड्यूटी बाउंड है या नहीं, यदि है तो उसके अगेंस्ट क्या किया जा सकता है। So these two are the precaution taken by the court for that particular purpose and with the clarity. As now, fourth, sixth, as to what type and in which case preliminary inquiry is to be conducted will depend on the fact and circumstances of the each cases. The category of cases in which preliminary inquiry may be made are as under. अब देखिए कुछ केसेस ऐसे हैं जिनको उन्होंने एग्जम्पशन दिया है, जहां पर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी may be made before registering FIR. One is the matrimonial dispute and family dispute, commercial offense, medical negligence cases, corruption cases. This is the catch line, and this is the cases where there is abnormal delay in latches. In initiating criminal proceedings, for example, over 3 months delay in reporting the matter without satisfactorily explaining the reasons for delay. The aforesaid are only illustration and not exhaustive for all conditions which may warrant preliminary inquiry. And finally, these two are there. मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ. Okay, read it again. There are two more parts. While ensuring and protecting the right of the accused and the complainant, a preliminary inquiry should be made time bound.
किस चीज को इंश्योर करने के लिए? दिस इज कंसर्न टू द आर्टिकल 21. See, ensuring and protecting the rights of the accused. Accused के भी right होते हैं, and the complainant too. So the balance way. A preliminary inquiry should be made time bound, and in any case, it should not exceed 7 days. So preliminary inquiry के लिए भी time fix किया हुआ है. The fact of such delay and the causes of it must be reflected in a general diary. So the fact of such delay and the causes of it, why it is caused delay, must be reflected in the general diary. क्यों delay हुआ? Hence, the general diary / station diary or daily diary is the record of all informations received in a police station. We direct that all informations relating to cognizable offences, whether resulting in registering of FIR or leading to an inquiry, must be mandatorily and meticulously reflected in the said diary. And the decision to conduct a preliminary inquiry must also be reflected as mentioned in the above. So this is the part. अब जरा देखिए, एक तरफ ये कहा जाता है कि यदि डिस्क्लोज होता है तो आप इंक्वायरी रिक्वायर्ड नहीं है, मैंडेट है, और इंक्वायरी भी 7 दिन के अंदर करें और करके आप ये करें. और एक एग्जाम्पशन देता है पैरा 6 पे, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी यहाँ पर आप कीजिए, क्योंकि ये जो है ना बहुत हाई इंटेंसिटी का केस है जिसमें मैट्रिमोनियल भी है और यहाँ करप्शन केस. तो करप्शन केस में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में भी. अब आइए आप इस केस में, दूसरे केस में, और इस केस में पैरा नंबर 13 पे सीधा सीधा हम लोग चलते हैं. This is 12. See para 13. In the present case, the allegation against the appellant pertain to abuse of official position and corrupt practices. मैं यहां से मैप कर रहा हूं इसको. Corruption cases and corrupt practices, which while holding the public office, such allegation fall squarely within the category of cognizable offense, and there exists no legal requirement for preliminary inquiry before the registration of an FIR. This is the finding in the present case, and this is the Lalita Kumari. There is a So ये रास्ता जो करप्शन का करप्ट प्रैक्टिस वाला था, इस केस में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जो पहले अलाउड था, डज इट नॉट क्लोज? करेक्ट सर. क्या कहेंगे इसको? एब्सोल्युटली करेक्ट. क्या कहेंगे इसको? डेवलपमेंट नहीं है, है जैसे डेवलपमेंट मॉडिफिकेशन के कैटेगरी में आता है. आंसर इज यस. तो सर
करप्शन केसेस जो है ना, अब डिफरेंस देखिए कि यहाँ पर कोर्ट कैसे देगा, क्योंकि इस पॉइंट को बड़ा केयरफुली एग्जामिन करना पड़ेगा. Once here is what the corrupt practice, present case is the corrupt practice, right, while holding the public office. Obviously corruption cases बिल्कुल वैसा ही होता है, करप्ट प्रैक्टिस से ही करप्शन रिलेटेड होता है. सो करप्शन केसेस का एक एग्जाम्पल यहाँ पर है, ये जो है ना दूसरा पार्ट, दिस इज द वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द करप्शन केसेस वेयर someone is sitting at the post of Indian administrative officer in official position, corrupt practices while holding the public office. Such allegations, even the allegations, such allegations falls squarely within the category of cognizable offense. You know, मैं यहाँ पर जो डिस्टिंक्शन करना चाह रहा हूं वो ये है, करप्शन केसेस के बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, इनफाइनाइट एग्जांपल्स, मे बी मे नॉट बी. आउट ऑफ देम एक वो सेगमेंट है जहां पर ऑफिशियल ऑफिस को यूज किया जा रहा है और वहां पर एलिगेशन आ रहा है, डिस्क्लोज हो रहे हैं, उसको आप मे बी मे नॉट बी में नहीं ला सकते, उसको आप क्लियरली कहेंगे कि इट इज कॉग्निजेबल ऑफेंस. द फर्स्ट फाइंडिंग इज दैट. अनदर फाइंडिंग इज, ये तो पहली फाइंडिंग था और अगली फाइंडिंग पे भी मैं जा रहा हूं, और जहां तक ये क्वेश्चन है देखिए बैलेंस बहुत अच्छे तरीके से इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में किया गया है. And there exists no legal requirement of this. The appellant's contention that successive FIR has been registered against him with an ulterior motive is a matter that can be examined during the course of investigation and trial. क्योंकि FIR रजिस्ट्रेशन के बाद अगला कोर्स है इन्वेस्टिगेशन, चार्जशीट एंड देन ट्रायल. इस स्टेज पे नहीं. The appellant has adequate remedies under the law, including the right to seek quashing frivolous FIR under section 482. तो आप वहां डेमोन्स्ट्रेट कीजिए कि ये क्वेश्चन के लिए फिट केस है, वहां जा सकते हैं आप. The right to apply for bail and the right to challenge any legal action, any illegal action of the investigation authorities before the appropriate forum. That right you have. Further, this court cannot issue a blanket direction restraining the registration of FIR against appellant and mandating a preliminary inquiry. अब देखिए ये वर्ड है mandating a preliminary inquiry, it was the requirement. और यहाँ केस ललिता कुमारी में ये कहता है कि here may be. बहुत अंतर है सर, बहुत अंतर. अच्छा, सैंक्शन, करप्शन के केस में सर्टेन सैंक्शन प्रोविजन है. सैंक्शन प्रोविजन चार्जशीट के स्टेज पे है, FIR के स्टेज पे नहीं है. So FIR can be registered, investigation can be done, and the material collected during the investigation, the charge sheet is being filed, but on that point of time sanction is required. Am I right or wrong? Absolutely right, sir. So maybe and mandatory, maybe is the possibilities, उनका discretion है, mandatory में उनका discretion खत्म हो जाता है पुलिस ऑफिसर का. Once this is a mandatory, आपको वहां ब्रेन अप्लाई करने की अब जरूरत नहीं, अब आप कीजिए. दिस इज नॉट योर डिस्क्रिप्शन कि मैं सोचूंगा, मैं ये करूंगा और वो करूंगा और वो करूंगा, नहीं. और डिस्क्रिप्शन भी आपका kind of, sir, 1 minute. हाँ 1 minute. It is only in these kind of cases where the police takes advantage. Mostly, देखिए isn't it? सर, ये क्लियरिटी लॉ हमारे सामने है, पुलिस वाले इसको अपने तरीके से इंटरप्रेट करते हैं. जी. कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने आपको ये भी दिया है कि यदि वो ना करे ना तो आप क्या कर सकते हैं, उसकी नौकरी खतरे में है.
यदि उसने गलत किया, क्योंकि उसकी ड्यूटी भी है। अब क्वेश्चन ये है कि एज ए लॉयर पहला क्वेश्चन ये है कि डू वी अवेयर अबाउट ऑल दीज थिंग्स विथ crystal clear mind? The answer is no. At large. So if we are clearly understanding all these things, पुलिस ऑफिसर यदि नचाए तो आप मुस्कुराएंगे, आप ये कहेंगे कि भाई साहब तुमको जो कहना है करो, उसके बाद मैं करूंगा। फिर पुलिस वाले को समझ आएगा, या फिर उसको नहीं पता है तो आप उसको बताइए कि ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का डायरेक्शन है भाई, तू अपना कर, मैं अपना करूंगा, चॉइस तुम्हारी है, बाद में बोलना मत कि नौकरी तुम्हारी जा रही है। Right. तो आप पहले इक्विप्ड हो विद द लॉ, देन यू आर रेडी टू टेक द एक्शन अगेंस्ट रॉन्ग डूअर्स, बिकॉज ये लॉयर है जो ये समझा पाएंगे। हम लोगों को जब पता नहीं है तो बाकी क्लाइंट को कैसे पता होगा। होपफुली मैंने क्लियरली डेमोन्स्ट्रेट किया है कि व्हाट इज द एक्सटेंशन और डिफरेंसेस इनटू 2025 INSC 350। Yes, sir. सर ललिता आज मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा था। आई हैड डन फॉर द डे। Thank you, sir. Very well explained. आप लोग ललिता कुमारी को थोड़ा सा इलेबोरेट करके पढ़ें, और मैं पांडे जी से एक बार और माफी मांगना चाहूंगा। पांडे जी की कॉपी में ये क्लियर कट लिखा हुआ था कि FIR इज मैंडेटरी एंड नो नीड टू प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, एंड इट वाज आउट ऑफ माय माइंड, और हमने कहा था कि आपने कहां से लिया। पांडे जी, आई एम सॉरी, आई एम करेक्टिंग माई सेल्फ, इट वॉज मैंडेटरी, यू आर करेक्ट, तो आपको मार्क्स मिलना चाहिए था। यू आर डिजर्विंग फॉर द मार्क्स, यू करेक्टली रोट योर आंसर। किसका? अब तो उसके ऊपर एक फर्दर क्लैरिफिकेशन उसके ऊपर आया ना, और वो क्लैरिफिकेशन जो है इस जजमेंट का क्लैरिफिकेशन, क्योंकि उस जजमेंट को आप देखेंगे वो डबल डिवीजन बेंच है, डिवीजन बेंच, वो इसके किसी रेशियो में कोई छेड़छाड़ नहीं किया है, बट एक पार्ट को, मतलब करप्शन के केसेस के एक विंग को उन्होंने कॉग्निजेबल ऑफेंस डिक्लेयर कर दिया। सो वंस दे डिक्लेयर्ड इट इज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, then certainly automatically come into the mandate, right? अब बड़ा ही रीजनड ऑर्डर है, ऑर्डर को आप देखेंगे रीजनड है। हाउएवर मैं थोड़ा सा कन्विंस नहीं हूं इस पर्टिकुलर जजमेंट से। So can we have the details of that judgment, please? Sir, one point. Obviously, once they declared कि if someone is sitting in official capacity और वहां कोई कंप्लेन आ रहा हो, तो दिस इज मैंडेटरली कॉग्निजेबल ऑफेंस। सो वंस आपने उसको डिक्लेयर कर दिया कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो वो कंडीशन जैसे ही मैच होगा कि एक ऑफिसर अपनी ऑफिस में बैठा हुआ है, उसके अगेंस्ट कंप्लेन आपने डाला उसके किसी एक्ट के वजह से, और आप ये कह रहे हैं कि ये कुछ करप्शन कर रहा है, फिर से मैं आपको रीड करके दिखा देता हूं, तब सर्टेनली वो ऑटोमेटिकली कॉग्निजेबल हो गया। डिस्क्लोजर और नॉन डिस्क्लोजर जो पहले जो पार्ट था कि इंफॉर्मेशन जैसे ही आएगा तो आप ये डिसाइड करेंगे, डिस्क्लोज करता है ही नहीं। Who will decide it is discloses or not? जिसके हाथ में कंप्लेन आया, that is the police officer. So police officer अब उसको cognizable offense, माने they have the sense to identify कि cognizable offense or not. If the cognizable offense is not, then they will enter into one question by way of inquiry within 7 days कि ये cognizable offense है या नहीं. Only if yes,
देन इमीडिएटली वो रजिस्टर करेगा। तो कोर्ट ने ये कहा है कि इस केस में कॉग्निजेबल है, तुम दिमाग मत लगाओ, मैं डिक्लेयर कर। अब ये कॉग्निजेबल डिक्लेयर हो गया। सो ऐसे सारे केसेस में इट इज डिक्लेयर्ड कॉग्निजेबल ऑफेंस, so they have to register an FIR. और as per Lalita Kumari, once they are denying to register an FIR, they have to come on your toes. फिर तो आप है और वो है और आपका कानून का डंडा है, फिर वो है, आप भी डंडा चलाइए कानून का। लास्ट जो क्वेश्चन आया था इसमें प्रीवियस पेपर वो था द मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर अंडर सेक्शन 154 सीआरपीसी विल नॉट बी contravention of Article 21 of the Constitution of India, held the Supreme Court in the case of Lalita Kumari. Now, types of FIR, write a note on this. That is already discussed, ma'am. That's what I said. ठीक है। फिर उसमें आया था मैंने यहाँ पर एक बात बोला ना, अल्टीमेट कंक्लूजन में एक पैराग्राफ एकदम क्लियरली मेंशन है, जो मैं आपको ये बता दूं। एक सेकेंड, ये पैराग्राफ क्लियर मेंशन है। दिस इज पैराग्राफ नंबर 111। कहाँ गया वो एक्यूज्ड और वो वाला जो था आगे, जिसमें 7 days मैंडेट किया हुआ था। Yes, No, 7. this is 7. yes. This is 7 is concerned to the rights of whom? Rights mean which right? This is Article 21. Okay. Right to life with dignity, and for of accused का भी है और कंप्लेनेंट का भी है। कंप्लेनेंट को इंसाफ चाहिए और एक्यूज जो अननेसेसरी उसमें फंसा हुआ है उसके लिए भी चाहिए कि अननेसेसरी आप किसी को फंसाए ना। तो उन दोनों के लिए यहीं पे आर्टिकल 21 फॉर बोथ है। ऐसी इसी कंडीशन को अवॉइड करने के लिए उन्होंने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के लिए टाइम बाउंड किया है और ये कहा है कि वो 7 दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। विद इन 7 days यू हैव टू परफॉर्म योर इंक्वायरी। Then they have asked again types of FIR. Sorry? Types of FIR. Right to? Types of FIR. This is the question. Types of, तो आगे पूरा पढ़ेंगे मैम तो पता चलेगा ना, पूरा पढ़ेंगे तो पता चलेगा। ठीक है। 3 पॉइंट्स थे टाइप्स ऑफ एफआईआर। तो am I clear up to this point or not? उदय जी आप कहना चाह रहे हैं? 5-judge bench judgment is binding on division bench. Obvious. So 5-judge bench judgment has declared that in corruption cases preliminary inquiry is needed. And this maybe. हाँ, उदय जी का ये क्वेश्चन मुझे समझ में आ रहा है। 2 judges bench कह रहा है कि मैंडेट है। Yes. ये कंफ्लिक्टिंग कैसे हो गया? ये कंफ्लिक्टिंग नहीं है उदय जी। और वो ये कह रहा है कि ऑल करप्शन केसेस पर ये फैसला नहीं है। ये करप्शन केसेस का एक एग्जाम्पल है। उस एग्जाम्पल को उन्होंने ये डिक्लेयर किया है कि इट इज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। उन्होंने डिक्लेयर किया है क्योंकि आप जरा देखिए, एक चीज मैं जरा दिखा दूं। ये जो कहा है ऊपर, इसकी बात आप कर रहे हैं, मैं जरा वापस आ जाऊं। आप जरा इसको पढ़िए। एज टू व्हाट टाइप और इन विच केस प्रिलिमिनरी to be conducted and will depend on the fact and circumstances of the case. Will depend on the fact and circumstances of the case. उन्होंने ये थोड़ी ना कहा है कि these are the cognizable offense however it can be. ऐसा तो नहीं कहा ना सर। उसमें से एक इंस्टांस जो रिपीट हो रहा है उसको इसके कंफ्लिक्ट में कहा गया, उसको उन्होंने कॉग्निजेबल डिक्लेयर किया है। अब जरा देखिए, मैं थोड़ा सा वापस आता हूं क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई वाज एक्सपेक्टिंग
पैरा 13 पे हम जा रहे हैं, बहुत केयरफुली डिजाइंड है। पैरा 13 पे जाइए। इसमें यही कहा है कि if the offense एक स्पेशल केस है, द if the एलिगेशन offense committed is squarely covered by this judgment, then that there is no need of preliminary वो inquiry. ऊपर नहीं, वो जजमेंट की बात नहीं है। द एलिगेशन अगेंस्ट एपेलेंट पर्टेन टू the abuse of official position. Yes. So the point is, in the present case, the abuse of official position and corrupt practices while holding the public office, right? So no need of preliminary inquiry. Such allegation falls squarely within the cognizable. ठीक है, तो जब यहाँ जो इंक्वायरी होगी, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी तो यही पता लगाने के लिए होगा ना कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है या नहीं है ना। आखिर व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी? टू फाइंड आउट whether this discloses an cognizable offense or not, right? So such particular offense, they declared कि such nature of offense is an cognizable. इवन द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में भी इसको कॉग्निजेबल डिक्लेयर किया हुआ है, तो वहां से इन्होंने इनहेरिट किया है। जस्ट गो थ्रू इट, दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग केस। लेकिन मैंने इसमें एक अलग काम किया है और उसमें कुछ अलग इंप्रेशन आ रहा है, तो थोड़ा मैं उसको भी डिस्कस करूंगा। सी, ये जजमेंट जो है ना, गुजरात हाई कोर्ट का ये जजमेंट अंडर चैलेंज था, राइट? तो हमने गुजरात हाई कोर्ट के उस जजमेंट को निकाला और उसको पढ़ा, और उसके बाद इस जजमेंट को पढ़ा तो मुझे लगा कि नहीं, थोड़ा और डायरेक्शन बदलना चाहिए था। ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, बट एक चीज और आप ध्यान दीजिएगा, नहीं मैं आपको ध्यान दिला दूं, दोनों जजमेंट को कंपैरिजन करते हुए। ये देखिए, इस जजमेंट में एक पर्टिकुलर लाइन पैराग्राफ है, जो पैराग्राफ कुछ इस तरीके से, ये रॉ जजमेंट है, और इसका मैं आपको ये दिखा दूं थोड़ा सा। इन्होंने ललिता कुमारी को डिस्कस किया थोड़ा सा, ये देखिए, ये लाइन हम आपको दिखाना चाह रहे थे। ये जो है ना, रिप्रोडक्शन है ललिता कुमारी का, जरा देखिए। ललिता कुमारी केस का रिप्रोडक्शन है, कैटेगरिकली रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर, द रिलेवेंट पैराग्राफ फ्रॉम द जजमेंट ऑफ दिस कोर्ट इन ललिता कुमारी एज रिप्रोड्यूस्ड बिलो। अब आप देखिए, पैराग्राफ नंबर कितना है यहाँ पर, 114, और यहाँ पैराग्राफ नंबर कितना है, आप नीचे आइए, 113, 115, और नीचे आइए यहाँ पर 120, और 120.1 पे फाइनल कंक्लूजन है। कंक्लूजन एंड डायरेक्शन क्या है, किस पैराग्राफ पे? पैराग्राफ नंबर 120, 120.1, और आगे आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ, यहाँ पर आप जरा देखिए, दिस इज 120.2, 120, वही चीज है, आप जरा पढ़िएगा तो बिल्कुल क्लियर पता चलेगा। 120.3, बस यही तीनों लिया हुआ है, तीन ही लिया है। और जबकि ललिता कुमारी एससीआर में आप देखें तो यहाँ पर ये सेम पार्ट इज देयर, बट यहाँ पर आपका पैराग्राफ नंबर 111 है, 120 नहीं है सर, 111 है, कंक्लूजन एंड डायरेक्शन।
कहां से आया? ये 9 पैराग्राफ की गड़बड़ी कहां से आ गई? SCC ओरिजिनल जजमेंट जो होता है, ये ओरिजिनल पार्ट है, ये हेड नोट्स नहीं है। एससीसी अपने एससीसी का ये रेफरेंस होगा, मैं आपको भी बतला दूं। एससीसी क्या करता है, वो इवन पैराग्राफ को भी तोड़ देता है मेन जजमेंट में, एक पैराग्राफ को 2 पैराग्राफ बना देता है। दैट सॉर्ट ऑफ डेयर एससीसी कैन डू ओनली। सर इतना रिकॉग्नाइज्ड है कि कोर्ट वहां पर रिप्रोड्यूस कर रही है, जबकि अब इंटायर जजमेंट जो था, जो कोर्ट में प्रोनाउंस हुआ था, वो मैंने आपको दिखाया, हेड नोट्स नहीं दिखाया। एससीआर उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करता। अब आप समझिए कि एक पर्टिकुलर पैराग्राफ हम कहें कि पैराग्राफ 111, व्हाट डज इट मीन? ललिता कुमारी पैराग्राफ नंबर 111 है। अनलेस अनटिल यदि मैं ये नहीं कहूं किसका, एससीसी या एससीआर किसका। अब बाकी सारे रिपोर्टर्स इतना डेयर नहीं करते, बट एससीसी करता है। पता नहीं उनको इतनी हिम्मत कहां से आती है। सर एक छोटी सी क्वेरी थी सर। ये चीज आपने नोटिस किया सर? हम डिस्कस करेंगे, पहले इसको आप लोग समझ लीजिए कि ये क्या मतलब ये चल रहा है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि एससीआर इज द मतलब मोस्ट ऑथेंटिक पार्ट। अभी अभी मैंने आपको दिखला दिया, आपको मैंने नहीं भरोसा हो तो थोड़ा सा और मैं आपको यहाँ पर पढ़ के दिखा देता हूँ। रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर इन मैंडेटरी 1 में हमने लिखा है ना, और थोड़ा सा और मैं ऊपर जाऊं तो यहाँ पर देखिए 120.1 में लिखते हैं, द रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर इज मैंडेटरी अंडर सेक्शन 154 ऑफ द कोड if the information discloses commission of cognizable offense and no preliminary inquiry is permissible in such a situation. क्लियर है? अच्छा, एक बात बताऊं मैं, एक बात और मैं आपको बताऊं, जरा इंटरेस्टिंग पार्ट है, वो भी देखिए। ये जो कंक्लूजन हमने पढ़ा है लास्ट टाइम, अगली बार हम फिर से जजमेंट में एंटर नहीं करेंगे, क्योंकि ये कंक्लूजन पूरा है। ये सारे कंक्लूजन को समराइज करते हुए हेड नोट्स में इनको कहाँ जगह दिया है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। यस, ये देखिए हेड नोट में लास्ट कंक्लूजन है, ये कंक्लूजन है। इसके पहले हेड नोट्स पढ़ेंगे, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, ऑल्दो इन्होंने क्या किया है, ये देखिए पैरा 106 से यहाँ पर इनहेरिट किया है एफआईआर के बारे में, यूनिवोकल टर्म्स एंड ऑल जो भी डिस्कशन है वो वहां से पिकअप किया है। और 11.2 registration of FIR is mandatory under section 154 of the code if the information discloses commission of cognizable offense and no preliminary inquiry is possible in such a situation. If the information received does not disclose a cognizable offense but indicates the necessity for an inquiry, a preliminary inquiry may be conducted only to ascertain whether the cognizable offense is discloses or not. If the inquiry discloses the commission of cognizable offense, the FIR must be registered. In case where preliminary inquiry ends in closing the complaint, a copy of entry of such closure must be supplied to the first informant forthwith and not later than 1 week. It must discloses a reason in bring the closing the complaint and not proceedings further. Here only mention para 111. पूरा समराइज कर दिया, जो कंक्लूजन था समराइज कर दिया हेड नोट्स में, बट जजमेंट पे नहीं छेड़ा है। बट आगे भी दिखाता हूं मैं, थोड़ा सा और आगे भी दिखाता हूं। 111 का अगला एक्सटेंशन, द स्कोप ऑफ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इज नॉट टू वेरीफाई द वेरिसिटी एंड ऑल, एंड उसके लिए लिखता है क्या, पैरा 111 5 and 6
कहाँ पर आपका प्रिलिमिनरी इंक्वायरी और वो रिक्वायर्ड है और कैसे केसेस में आप चेक करें। अच्छा, while ensuring and protection 802 यहाँ पर पैरा 111 फिर से लिया है। While ensuring and protecting the right of the accused and the complainant, a preliminary inquiry should be made time bound and in any cases it should not exceed 7 days. The fact of such delay and causes, देखिए ये यहाँ लिखा, कहीं भी यहाँ आर्टिकल 21 नहीं लिखा, बट दिस इज फॉर द इंश्योरिंग एंड प्रोटेक्टिंग द आर्टिकल 21। मैं आपको बता रहा टू कम ऑल दिस कंक्लूजन, इतने सारे केसेस डिस्कस किए हैं, देख लीजिए आप, नीचे लिखा हुआ है आपको। रेफर टू और नीचे रेफर टू, इतने सारे केस रेफर करने के बाद ये कंक्लूजन पे पहुंचे। बाकी 11 पॉइंट है, आप लोग डिस्कस कीजिएगा, समझिएगा, अपने आप से डिस्कस कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि 11 में डिफरेंस क्या क्या है। सर एक छोटी सी क्लैरिटी चाहिए थी सर। आप प्लीज सर विद ड्यू रिस्पेक्ट सर, आपने बहुत अच्छा सर इसको, मतलब आई गॉट ऑल द थिंग्स, बट सर एक मैं क्वेश्चन समझना चाह रहा था सर। जैसे हम अगर जो ललिता कुमारी जजमेंट को रेशियो डिसिडेंडी लेते हैं, तो ये जो जजमेंट अभी 2 जजेस बेंच की है, ये सर स्टार डेसिस में आएगी या ऑबिटर डिक्टा में आएगी? सॉरी सर जैसे ललिता कुमारी, ऑबिटेड डिक्टा का कोई क्वेश्चन ही नहीं है सर। ऑबिटेड डिक्टा अभी हमने डिस्कस भी नहीं किया है, एक्स्ट्रा डिस्कशन कहाँ है? नहीं सर मैं बस ये अपनी नॉलेज के लिए पूछ रहा था ये कि क्लियर कट रेशियो एक्सटेंशन है, क्योंकि यहाँ जो है ना, ये पर्टिकुलर ऑफेंस, पर्टिकुलर नेचर ऑफ ऑफेंस वाज डिक्लेयर्ड एज कॉग्निजेबल ऑफेंस, दैट इज व्हाई मैंडेटरी, क्योंकि वंस दिस इज कॉग्निजेबल तो मैंडेटरी तो ऑलरेडी है। इसमें वो इसको वेरीफाई करने के लिए प्रिलिमिनरी इंक्वायरी चाहिए था ना। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का आउटकम क्या होगा? उसका आउटकम क्या होगा कि आइदर दिस इज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉट, so disclosure is there or not. So this is concerned to the disclosure. Such nature of the cases is disclosed. Court said it discloses, that's it. सर So nothing conflict among them. सर एक चीज था जो क्लैरिफिकेशन चाह रहे थे हम। Please please इसमें 2 वर्ड्स आ रहे हैं एक्सटेंशन में कि डिस्क्लोजेस और एक आता है इंडिकेट्स, 2 चीज आता है। तो यदि एफआईआर के कंटेंट से ही डिस्क्लोज्ड हो जाता है उस स्टेटमेंट से, एफआईआर नहीं, कंप्लेंट के कंटेंट से, इंफॉर्मेशन के कंटेंट से, हाँ इंफॉर्मेशन के कंटेंट से, यदि ये चीज कोई सेंटेंस ऐसा आता है जो कि ये क्लियर कर देता है कि ये डिस्क्लोज्ड, ये ऑफेंस हुआ है या ये ऑफेंस हमने देखा है, अब तो सूचना दे रहे हैं तो हमने ये ऑफेंस देखा है, हाँ वो क्लियर या है, इसकी डिस्क्लोज जानकारी होता है, है। हाँ, तो वो वहां पे वो मस्ट होना चाहिए। और एग्जैक्टली यदि होता है। और यही यदि बात। और यदि कुछ भी एम्बिग्विटी है या वो इंडिकेट्स करता है, संदेह उत्पन्न करता है कि नहीं ऐसा इंक्वायरी ऑफेंस हुआ जरूरी है, है फिर। तो नहीं फिर नहीं, वहां पे संदेह इंक्वायरी। उत्पन्न करना नहीं है। संदेह उत्पन्न करने के लिए आपको अगले कंटेंट में पढ़ना पड़ेगा, दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा, वहां वेरियस वर्जन माइट बी पॉसिबल। संदेह से आपको लेना देना नहीं है। इंडिकेट से क्या आइदर इट हुआ? इज डिस्क्लोजेस और नॉट, सिंपल क्वेश्चन। इफ यस, रजिस्टर्ड इट एंड गो फॉर द इन्वेस्टिगेशन। Sir, he is asking 2 points. Number one, he is asking disclosures are indicated. If there is a coming to the disclosure, point. FIR is mandatory. If it is शैलेंद्र जी, indicative, शैलेंद्र जी, investigation is. ऐसा है कि हमारे बिहारियों को क्रिमिनल केस में इतना मजा आता है ना, सब सर 2 चीज है ना, 2 पॉइंट है ना। एक तो ही इज सेइंग कि इफ इट इज डिस्क्लोजेस, अगर डिस्क्लोजेस है तो FIR तो रजिस्टर मैंडेटरी है। हम ये कह रहे हैं शैलेंद्र जी, जरा सा एक लाइन हमको कंक्लूड करने दीजिए। ऐसा है कि समवेयर नोवेयर डिस्क्लोजेस, कहानी कह के अपना कहीं डिस्क्लोज नहीं कर रहा है, लेकिन लग रहा है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा, देन दैट मींस इंडिकेट, that means indicate
and only in preliminary inquiry's objective is whether cognizable offense is there or not. That's it. उसके आगे नहीं जाना, पीछे नहीं जाना। अब क्या है कि कंप्लेन में 5 पैराग्राफ है, एक पैराग्राफ क्रिमिनल ऑफेंस डिस्क्लोज करता है और ठीक अपोजिट 5वां पैराग्राफ ये कहता है कि नहीं। तो क्या करेगा पुलिस ऑफिसर? पुलिस ऑफिसर को दिमाग नहीं लगाना, पहले पैराग्राफ में मिल गया या 5वें पैराग्राफ में मिल गया कि डिस्क्लोजर है तो रजिस्टर करो, दैट्स इट। और यदि ऊपर से नीचे तक कहीं भी डिस्क्लोजर नहीं हो रहा है और इंडिकेशन है, तो पूरा पढ़ने के बाद पता चलता है कि कहीं ना कहीं हो सकता है, तो उसको वो चेक करे, दैट्स इट। Sir, with due as respect, simple and as clear. शैलेंद्र जी, am I clear up to this point or not? प्लीज आप बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कोर्ट बहुत क्लियर है, और यदि कोई पुलिस ऑफिसर इसमें दाएं बाएं करेगा, इसमें तो वो है जी, उसमें तो वो है जी, वह सीधा सीधा जा करके उसको समझाइए, एक वार्निंग दीजिए और एक्शन में आ जाइए। जानते हैं, जब तक एक गुंडा सड़क पे चलता है, वो किसी को झापड़ नहीं मारे एब्रप्टली, कोई डरेगा उससे? पावर है तो पावर का एब्यूज मत कीजिए, एक्सेसिव यूज मत कीजिए, बट प्रॉपर यूज तो कीजिए। यदि प्रॉपर यूज भी नहीं करते हैं तो आपका वो इनएक्शन भी डेरिलेक्शन ऑफ ड्यूटी में आ जाएगा, मेरे समझ से। मैं आप सबको बोल रहा हूं, यदि आपके नॉलेज में आपके साथ ऐसा हो रहा है कि कोई पुलिस कंप्लेन नहीं कर पा रहा हो, तो फाइंड आउट द मैकेनिज्म टू ग्रैब देम, बिकॉज लॉ इज विथ यू। ये बहुत बड़ा चेक एंड बैलेंस हो जाएगा, जानते हैं, जस्टिस इंश्योर करने के लिए ये बहुत बड़ा लाइन होने वाला है। यदि हम सब ललिता कुमारी को ही ढंग से पढ़ के समझ लें, और इसके एक्सटेंशंस तो बहुत सारे आए हैं, बहुत सारे कंडीशंस में क्लैरिफिकेशंस हैं। उस जजमेंट का मैंने एक ही लाइन एक्सप्लोर किया है, आप लोग इसको भी पढ़िए, उसको भी पढ़िए, बहुत कुछ मिलेगा, बहुत सारे सर्कमस्टांसेस आएंगे। और इस जजमेंट की एक और खासियत है जो अभी लेटेस्ट आई है, तो हाई कोर्ट को भी मैंने एक वार्निंग और एक पोजीशन पे लिया है कि अननेसेसरी आप इसको लिंगर नहीं करें। Sir, if you don't mind, can we have the title and the details of that judgment which you just referred? Title we already shared so many times. You shared, I missed, don't mind, sir. That is 2025 INSC 350. Pradeep Sharma versus the state of Gujarat. Thank you, sir. जजमेंट डेटेड, ये भी नोट कर लीजिए, जजमेंट डेटेड 17 मार्च 2025। आज क्या डेट है? 22। हम लोग 5 दिन के अंदर इसको डिस्कस कर रहे हैं। Thank you, sir. One small point, sir. This whatever it is very well understood, sir. One point was also there in this judgment. The appellant has prayed that no future FIR should be launched against him without preliminary inquiry. For that, the Supreme Court directed we cannot do that because that will amount to legislation. We will not interfere. That will come when that part also. वो देख लीजिए उसमें। बट द थिंग इज कि कहाँ कैसे अप्लाई करते हैं, कितना छोटा छोटा डिफरेंस कंफ्यूजन को लीड करता है। वो डिफरेंस की क्लैरिटी यदि हो, पॉइंट मेरा सिंपल है, मोरल ऑफ द एंटायर डिस्कशन इज दिस कि केयरफुल एग्जामिन का मतलब क्या होता है। इन छोटी छोटी चीजों को जब तक कंपेयर नहीं करेंगे तो क्योस में चलता है सब कुछ। पता चलेगा कि ये उसको इंटरफेयर कर रहा है, वो उसको, लेकिन जब आप इमोशन में कोर्ट में पहुंचेंगे तो कोर्ट बोलेगा कि किधर इंटरफेयर कर रहा है। बड़ा ऑकवर्ड सिचुएशन में आ जाता है। और कई बार मैंने कोर्ट में देखा है कि ऐसे ऑकवर्ड सिचुएशन होते हुए, और उस समय यदि जजेस रिएक्ट करते हैं ना, तो बार को बुरा लगता है, बार के कुछ लोगों को बुरा लगता है कि अरे उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। जैसे कोर्ट 3 में वो जो रिएक्शन है कि ड्राफ्टिंग कैसी होनी चाहिए। सर, जिस तरह कॉम्प्रिहेंसिवली सर आपने स्टडी करा है दोनों केसों को, सर आई रियली अप्रिशिएट एंड एडमायर इट। बट सर एक आपके एक्सपीरियंस से छोटी सी सर एक ये आपसे एक हेल्प थी कि जैसे दोनों केसेस के अंदर हम क्या प्रिज्यूम करेंगे, क्वेश्चन किस तरह का इवॉल्व हो सकता है कि मतलब 2 जजेस बेंच से रिलेटेड आएगा,
या ये आएगा कि करप्शन से रिलेटेड के वाइदर द स्कोप इज नहीं, आप यहाँ पर ये कहिए कि ललिता कुमारी की ये फाइंडिंग है कंक्लूजन, ठीक है। हाउएवर इन द रीसेंट जजमेंट 2025 INSC 350 division bench of this court also held to the extension of Lalita Kumari that कोई ऑफिसर ऑफिशियल कैपेसिटी में बैठा हुआ है और करप्शन चार्जेस हैं, then it is amounted as cognizable offense under Lalita Kumari. And the cognizable offense and registration of FIR is mandatory as per Lalita Kumari. So it is an extension, that's it. एक लाइन से ज्यादा डेडिकेट करने की जरूरत नहीं. Very beautiful, sir. Got it, sir. That's the connection. However, मैंने न कंप्लीट ये जजमेंट पढ़ा न कंप्लीट वो जजमेंट पढ़ा आपके सामने और आपके लिए. एक पॉइंट को कनेक्ट करना था. दैट आई डेमोन्स्ट्रेटेड. माय ऑब्जेक्टिव वाज वेरी क्लियर कि हाउ दिस इज कॉल्ड द एक्सटेंशन. Of course, all the extensions are of the latest development, right? But applications ये नहीं है. एप्लीकेशन फर्दर है. वो पहले उसको ऑब्जर्व किया, फाइंडिंग है, देन अप्लाई किया. That's what we can say it's a extension. उसी पॉइंट पे मैं हूं. अगली बार हम लोग लीडिंग केसेस के अंदर आर्टिकल 141 के जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं उसको हम समझेंगे और एक लाइफ साइकिल की कैसे जजमेंट चलता है, सो दैट कि वी कैन फाइंड आउट अकॉर्डिंगली द प्रोपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल्स और उसको हम लोग आगे प्रोसीड करें. आई होप कि आज का डिस्कशन भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वो होगा आप लोगों के लिए. However, it was so technical and so depth. Yes, उसकी संभावना बहुत ज्यादा नहीं होती है, but फिर भी. So let us conclude for the day. Thank you, sir. Very good discussion. Thank you so much, sir. Thank you. कोई और question है then please go Thank you, ahead. sir. Thank you very much, sir. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Good day, sir. So, मैंने ultimate story यही है ना. The moral of the story is this: what you learn at the end of 1.5 hours, you learn how to make a differences between the properties. Examine, मतलब proper examine जो है ना, यदि मैं छोड़ दूं, जैसा उदय जी ने अभी भी पॉइंट आउट किया था, प्रेमा फेसाई लगता है कि उसको ओवरराइड कर रहा है, बट वो ओवरराइड नहीं कर रहा है ना, वो पीछे से सेट कर रहा है. तो ये जो है ना लॉयर की क्वालिटी होती है. ये सिर्फ लॉयर ही समझ सकता है और आप लोग जिस मोमेंट को कैप्चर करेंगे ना, बहुत मजा आएगा. कोर्ट में भी आपको भी बहुत मजा आएगा और जजेस को भी बहुत मजा आएगा ना. दे विल बी, यू नो, द कॉर्डियल एंड हैप्पी एनवायरनमेंट वुड क्रिएट अमंग एंटायर नेशन. Thank you, sir. We'll see again on after 21st. मतलब this was the 18th session. It will go up to 28th session regarding crystallization of criminal cases as well as Article 141. After that, we expect कि तब तक आ जाएगा आपका नोटिफिकेशन भी, क्योंकि अभी 3 वीक और है. 3 वीक में तो आ ही जाना चाहिए. इससे ज्यादा डिले तो लगना नहीं चाहिए. We'll discuss later. Okay. Have a nice day. Yeah, same to you, sir. Thank you, sir. Thank you very much. Okay, have a nice day. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you.